बहुत जल्दी करा. Okay, next point is Yangtze, Li5. What is the speciality of Li5? Li5 point? No, I'm not asking you. Li15, that is. So don't get confused and don't confuse other people, those who are there online. You talk because you people have been working with me since long time now, and you are much ahead of people those who are online. Okay, and when you talk, they get confused. So please don't talk. Okay. Yeah. If I ask you anything, then only talk. Right? Yangtze, Li5. On the radial side, okay, ये वाली radial, ये radius है. This is the radius bone. On the radial side, where it is of the wrist. When the thumb is tilted upward, या thumbs up करते हैं ना, thumbs up, गिना मत, ऐसा. ये यहाँ पे एक spot आता है, वो गड्ढा type. हाँ. This is called as the anatomical snub box. वो क्यों कहते हैं मालूम नहीं, क्योंकि वो नसवार की डिब्बियां ऐसी छोटी सी होती थी जिसमें से नस लेके लोग सुनते थे, लिए anatomical snub box. So it is between the depression of the muscle extensor pollicis longus and brevis. It is a jingle point of the meridian. Indication: headache. Oh, sorry. Jing river point of the meridian. Sorry, it's a Jing river point. What's a Jing river point? वो जब हम 5 एलिमेंट्स करेंगे तब समझेंगे. अभी फिलहाल में छोड़ दो उसको, सिर्फ अंडरस्टैंड करो जिंग रिवर है. When we'll do 5 elements, we'll be doing these points in detail. Jing river, sea, then Shu stream, Jing well, all that. Okay. Indications: headache, redness of the eyes, swelling of the eyes, pain in the wrist, fever with hallucination, mumps, sore throat. ये सब ये पॉइंट का इंडिकेशन है. फंक्शन एंड headache, redness, pain, swelling of the eyes, wrist pain because it is on the wrist. What are the points? Points can treat the areas where they are located. There are certain points which are distal to the location or the site of the ailment. Okay? So all those points, those who are around the area of the neck or on the meridian or on the part of the meridian or the internal part of the meridian, all those things, all those, like it is on the wrist, so you can treat wrist pain. It can also treat fever. But कौन सा वाला fever? Fever with hallucination. Fever with hallucination के लिए ये एक अच्छा point है. This point is very good for fever with hallucination. तुमको fever है? Hallucination होता है? Hallucination का मतलब होता है there are two types of hallucination. One is an auditory hallucination where you can hear a lot of sound, and visual hallucination where you see actually. Okay, that is hallucination. होता नहीं है, दूसरा नहीं देखता, वही आदमी देखता है. Okay, so hallucination किसी भी तरीके का अगर है, वो ऑडियो है या विजुअल है, you can end with fever. खाली हेलुसिनेशन है तो उसके लिए दूसरे पॉइंट्स है. लेकिन फीवर विद हेलुसिनेशन मतलब जब बुखार सर में घुस जाता नहीं, उसके सर में बुखार चला गया, तो जनरली हेलुसिनेशन होता है. ओके. मम्स व्हाई मम्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं, यहाँ है ना. तो ये पाथ ऑफ द मेरिडियन है ना, एलाई यहाँ से MEMS
Mumps, MUMPS. MUMPS. Sorry, sir. Thank you. Thank you, Rajesh. PS. हाँ. Mums, MEMS मतलब मम्मी होता है, mother. Mothers. Many mothers. हाँ. Sore throat. Okay. Then we'll be able to. For sore throat, if we give this 1 point, it's not Hmm. enough, no? There must be No. other points as well. No. Only this point. Only this point you can't give. Sore throat के लिए दूसरे भी points है, lung points भी है. Please हो गया रवि का We can picture. use make use of lung point. हाँ. Then LI4, then DU14, spleen 6, spleen 9, spleen 10. All these points we use for sore throat. Okay. Yeah, because sore throat का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं infection हुआ है. हाँ, correct. Infection हुआ है तो हमको infection को deal करना पड़ेगा. Correct. वो इन्फेक्शन कौन डील करता है जनरली? क्यों इन्फेक्शन डील करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, या फिर दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं. हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किए थे. एक तो होता है नॉन स्टेरॉइड और एक स्टेरॉइड बेस्ड, है ना? हाँ, वो तो हमारे को जो एक्यूपंक्चर में जो है एंटीबायोटिक के सारे पॉइंट, एंटी इंफ्लेमेटरी पॉइंट्स देंगे, तब जाके हम सोर थ्रोट को ट्रीट कर पाएंगे, है ना? फिर ऑल दी इम्यून एनहांसिंग पॉइंट्स लाइक DU14, GP34, 36, स्प्लीन 6, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इम्यून एनहांसिंग पॉइंट्स हैं. सो उन सबको मिला के हमको एक जन्म गुट्टी बनानी पड़ेगी, है ना? हाँ, तब जाके वो उसका काम होगा. LI20 भी देते हैं. मैं LI20 देता हूँ बायलैटरली अगर सो थ्रोट पे. तो क्यों? क्योंकि लंग स्टार्ट फ्रॉम थ्रोट, यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड होता है जहाँ पे एंड ऑफ द लंग्स होता है. ठीक है, ये डायफ्राम तक. Okay, expel the wind, releases exterior. Expel the wind, releases exterior. So wind is a pathogenic factor. So all these things can come because of wind. Expels the wind, releases exterior. Yeah. So like Bhushan has watering of eyes. Okay, so I had put one auricular point which is there in the earlobe for eyes, and his watering got stopped. Okay, so that is how. And why the watering was happening? हवा नहीं त्रास होता था कि नहीं? हवा उजेड़ा आणि गाडीवर हवा चालत असताना नव्हता सुरू राहील हवा में. हाँ, so that is how he was having. That is the pathogenic factor. Light is a pathogenic factor. So by treating certain points, what it does, releases the exterior. क्या हुआ? इनका जो आंख, एक्सटीरियर जो आंख है वो क्लियर हुआ. इसके वजह से उसका इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हुआ फिर बाद, है ना? दैट इज हाउ इट रिलीजेस द एक्सटीरियर. लाइक हाथ जैम है, हमने काम किया, जब हाथ जैम होना बंद हो गया तो क्या हो गया? एक्सटीरियर रिलीज हुआ. सो दैट इज हाउ इट रिलीजेस द एक्सटीरियर. Now, that is one of the factors. Okay, then we'll have to find out what pathogen are the damp. Is it damp? It is cold. Whether it is heat? Whether it is damp cold? Whether it is damp heat? All these. हाँ पांडे सर बोलो. हेलो, बोला नहीं. Okay, so we'll have to find out, and when we'll learn diagnosis and treatment, at that time we'll understand all the pathogens what of attacks. Okay,
But just now you understand it expels the wind. Okay. And releases the exterior, benefits throat, stops pain, drains fire. Okay. So this point will drain the fire if the fire is excess in the meridian or the organ. Okay. ये sore throat वगैरह भी जो है ना, पेन इन द आईज वगैरह, ये सब हाई इसकी वजह से हो सकते हैं. हीट इन द लंग मेरिडियन. Okay, so it drains the fire in the organ and as well as in the meridian. What is the qualification of this point? The qualification of the point is Jing River point of the meridian. It's a Jing River point of the meridian. Jing Well, Ying Shu. What's the word? What does the word Jing mean? Jing means Jing दो चीजें होती है. जिंग वेल को भी कहते हैं और जिंग रिवर को भी कहते हैं चाइनीज लोग. Oh, अच्छा अच्छा. जिंग वेल पॉइंट है ना, वैसा ये जिंग रिवर पॉइंट है. अच्छा. ओके. देन हर्सी पॉइंट, ये 5 पॉइंट होते हैं ना. हाँ हाँ. वो 5 पॉइंट में से ये एक पॉइंट है, रिवर पॉइंट है. हर्सी के पहले का पॉइंट है, ये सी पॉइंट के पहले का पॉइंट है. Prior to it is proximal to the C point, distant to the C point and proximal to the well point. Okay. Okay. Ravi, So extra information is Yang. The name of the point is Yangtze. So Yang equals Yang as in Yang, and Z means the stream. What is the spectrum of Z? Z? XI. Ravi, you said drains fire. उसके पहले आपने क्या बोला? Expels wind, releases to exterior. Releases exterior, yeah. And drains fire. And what else? Drains fire. If there is an attack of fire on the meridian, then it will drain out the fire. Okay. Okay. This, how to drain the fire and all these comes under the 5-element theory of TCM. Right. So once we understand all those things, we will be able to understand what is fire. What the element of this meridian is? What is it? Metal. Metal. Who controls metal? Who controls fire? Fire, sir. Okay. No. Fire controls metal, है ना? So if that fire becomes excess, what are fires in the body? Heart and pericardium. Heart, pericardium, triple warmer, and small intestine. These are the fire. And small, oh yes. fire meridians, right? I forgot two So of them. all these will control or keep in check the lung meridian, है ना? If they are in excess, because if lung energy is in depletion, what will happen? Fire will become excess and they will start to control it. So the excess fire can happen in the large intestine meridian or the lung meridian. Okay, because there are a couple of them. So they both are metal. So that is how the fire can become excess. If the fire becomes excess, then you have this point can drain. Even excess fire will cause other illnesses, no, Ravi? Yes, yeah. So it will show us the symptom that yes, the fire is been increased in or getting into the organ and the meridian. It will show us by the symptoms. So we know, अच्छा ये fire का symptom है, ये fire का symptom है, तो अपने को अगर लंग में अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर है, अच्छा लंग में अगर लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में भी अगर नहीं है, सिर्फ लंग में है, तो उसका असर लार्ज इंटेस्टाइन पे भी होगा ना. हस्बैंड को अगर तकलीफ है तो वाइफ को तकलीफ होगी, वाइफ को तकलीफ है तो हस्बैंड को तकलीफ होगी ना. तो वो हिसाब से हम इसका फायर को कम करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं. Okay. So Yangtze means Yang stream. So this point is called as Yang stream in Chinese. Yangtze. उसका मतलब होता है Yang is in Yang and stream मतलब stream, मतलब
Bahav. Okay. And it is already Jing river point of the river here. Energy is more flushing than the Jing well point. More flushing. Okay. And at sea point, it will be more flushing. But concentration and focus will be on the Jing well points of the energy accumulation. Very see, acupuncture needle is very sharp, so it can penetrate easily in the skin. But if it is blunt, what it will be? It will give you pain. So Jing well points, if you needle, they are more effective because total focus. जैसे sun rays को focus करते हैं हम लोग magnifying glass से भी focus. That are focus point. It can burn a hay or a paper. Okay. But otherwise, if you stand in the sun, it will burn. So Jingwell points are like that, magnified. Focus energy. Next. Li6, Pianli, Pianli. Pianli. Yamli. I separate or in same spelling? No, Li. PIAN. Yes, right. Yeah, Sharma, she's right. But Li is large difference, that is another thing. But I am saying Pianli, that is one word. Well, that's what you see, you lost your focus. So don't do that. Painly, nahi, Pianli. Chanmo, this is your first this thing, mistake. और घर जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा, सांबा. हाँ. Pianli is very good. Okay, on the radial side of the palmar aspect of the forearm, on the midpoint of half of the line connecting Li5 and Li11. Li5 कहाँ पे ये? This snub box on the radial side, थोड़ा अंदर बाजू से आता है, palmar side में आती है, हाँ, ये side आती है, and it is on the line connecting Li11 and Li5. So this is the line. Li11 यहाँ पे ये देखो यहाँ से, लेकिन वो अंदर बाजू से, हल्का सा अंदर बाजू से आती है. ये देखो ये यहाँ से आएगी, यहाँ से. Li11, ये this is Li11. So ये उनको नहीं दिख रहा. See this Li11 यहाँ पे, ये crease पे, यहाँ, okay. तो ये लाइन से एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स अगर ज्वाइन करेंगे, वहां पर जो है वो लाइन 3 चुन अबाउ यांगजी, Li5 से 3 चुन अबाउ, और इट इज 3 चुन proximal to Li5. We'll say 3 chun proximal to Li5. Okay. On the radial side. So this is radial. This is Ulnar. This is radial. This is radial. This is ulnar. Ulnar bone. So ulnar side and the radial side. Radius. This bone is radius. Anatomy thoda weak hai. Okay. It's the lower connecting point of the meridian. Lower connecting point of the meridian. Okay. What does lower connecting point does? It connects to the All lower connect. Yes, they will. Yes. They'll follow. It connects to the corresponding organ. It connects the yang with yin meridian. Yin with Yes. yang. Sorry. Yes. Okay. Yes, yin with yang. And this is the point. The lower connecting points will also remove the excess emotions which will be there. What is the emotion of the metal lung? Grief. Large intestine B, because there are a couple organs, the emotions will be same. So the grief
If you see lot, so you will see a lower connecting point of the lung and the lower connecting point to remove that grief from a person. If they are holding grief, then they will show different symptoms. Then you will know itching on the skin will be because of lot of grief, holding of lot of grief. Sir, the eczema. Yeah, yeah, yeah. All just because of grief, sir. Yeah. All these problems and Ravi, should we also then be using this point for pruritus? yes, you can. What No, is that because pruritus? it is skin pe khujli aana. Yes. Itching, scabies, eczema, psoriasis. Psoriasis, Yes. हाँ. All these you can do. Excellent, yeah. This is amazing. Can constipation be is also one of the symptoms of because it is attached to the large intestine. Yeah, but yes, it is. Holding. Once you hold any of your emotions, you will definitely get constipated. Really? Devar. So मेरा तो release पर- करो वैसे mind से, because most of the things are mind related. हम्म. माइंड में पहले होती है चीजें और बाद में तुम्हारे अपने बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है. कोई डाउट है क्या देवल? कुछ है कहना नहीं, है? डाउट नहीं है. I'm- नहीं, बोलो बोलो कुछ अगर होगा. नहीं नहीं, मेरा सेल्फ डायग्नोसिस चल रहा है इसलिए. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ. Indication: wrist and the palm and the eye pain, even eye diseases, epitaxis. Epistaxis also. Epitaxis. Epitaxis मतलब नाक से खून बहना. हाँ. Nose bleeding. Okay. So you can treat nose bleeding from this point. Wrist and palm pain, huh? Yeah, wrist, palm, arm, eyes, all pain in these areas. This will help. For the eyes, it becomes the distal point. Eyes, it becomes distal point. For nose also, this becomes a distal point. And if any point on the nose, if you are working, then what point it will be? If any point around the nose you are working, say for I like cold, what is that point called? this local points. Local point. Okay. Yeah, this Actually. local point. And those who are away from, like, if you are working for epitaxis, then it becomes a distal point because it is away from the nose. Yes. Hmm. Sore throat is also one of the indications of this point. Puncture 0.3 to 0.5 chun, apply 3 to 5 moxa cones and 5 to 10 minutes moxibustion. Function of this point is to support the descending chi of the lungs, open the waterways of the lungs. Okay, removes obstruction from the channel. Ravi, slow. Repeat. Descending key. Yeah, descending chi of the lung. It supports the descending chi. See, you have to push the lung chi downwards. Yes. Okay, because the lung chi has tendency to go upwards. Other organs, they support the lung chi to go downwards. Okay, so even this point helps the lung chi to go down. Okay? Because lung chi has to go down. Starts यहाँ पर होती है middle jaw में, it goes down, connects with the large intestine, and then it coils upwards, and then continue to go upward till the throat, and from there it recedes.
है ना, अपना डाइवर्जेंट मेरिडियन जो है वो नीचे जा रही है ना, लेकिन उसका जो ओरिजिनल मेरिडियन है वो कहाँ से जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए उसको नीचे जाने के लिए, उसकी चीज को नीचे जाने के लिए हमको फोर्स करना पड़ता है या फिर अलग से स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल keep that descending key of lung strong and move it downwards. It removes the obstruction from the channel. Channel is what? Large intestine channel. It's called a meridian. It's also called a channel. Okay, so large it removes obstruction from the channel and also the connective tissues. अब connective tissue यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्किन एंड बॉडी हेयर. एंड व्हाट इज द ऑर्गन व्हिच इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लंग? नोज. Organ is nose. It opens to the nose. Lung opens to the nose. Okay. So even large intestine will open there because they are couple of them. Okay. What is the qualification? Lower connecting point is the qualification of this point. Okay. The extra information is PN is partial, that is to one side, and Li is to pass. Okay. So I don't know, PN Li, partial pass. What is it? LI6? LI6. Huh? Okay. So how it is partial pass, I don't know, but that is how the Chinese, they say that it is a partial pass. It refers to the connection of the lung via collateral. Okay. That is PN Li, partial pass. Okay. Because it is a lower connecting point, it connects the lung via collateral from LI6. Again, now. Next point is LI11. Qi, Qi, QUI, Qi, QUCHI, LI11. Okay. QUCHI. LI11. Qi. Possible. Then, it is on the radial side of the transverse crease of the elbow, on the midpoint between chizza, that is lung 5 idhar hai, lung 5, and the humerus, lateral condyle of the humerus. Condyle matlab head of the bone. कौन सा bone? Humerus. उसके बीच में है ये पॉइंट. ये देखो, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये ओके. और लंग 5 यहाँ पर है, यहाँ ये देखो, यहाँ पे. तो इन दोनों के बीच में वो पॉइंट LI11. You got it? Online people? No, please repeat, Ravi. The humerus क्या बोलते हो? ह्यूमर क्या? ये जो है ना, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस. ओके. यहाँ, ठीक है. और यहाँ पे लंग 5 है. ओके. ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, यहाँ ये. इनके दोनों के बीच में यहाँ पर वो पॉइंट है, ये. ओके. ये क्रीज से हाफ शून्य, ये जो है ना, ये क्यूबिटल क्रीज. ओके. इसके हाफ शून्य बाहर है. ओके, गॉट इट. दिखा? यस. It's the best point. Oh wow, I love that one. Yes. LI4, LI11, PU14, इतने good one. बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ये पॉइंट्स. Okay. So indications are headache, dizziness, redness of the eyes, sore throat, impairment of the upper limbs. अब impairment मतलब उनका जो है वो काम नहीं करना.
impairment of the upper limbs. Upper limb मतलब दोनों हाथों को upper limb कहते हैं. ये पाँव को lower limbs कहते हैं, वो हाथों को upper limbs कहते हैं. And it also treats the impairment of the upper limbs. कोई भी तरह का paralysis, headache, dizziness, redness of the eyes, sore throat, impairment of the upper limbs, and abdominal pain, vomiting, diarrhea, frozen shoulders, common cold, infantile paralysis, common cold, paralysis. Infantile paralysis. हाँ. रामदेव बाबा को 2 साल की उम्र में पैरालिसिस हो गया था, उनका आंख आधा हो गया. Really? बंद ही नहीं होता है ना वो आंख. वो उतना मैंने देखा नहीं, मगर मेरे को खबर मिली है ऐसी. हाँ, वो बंद नहीं होता उसका आंख. पैरालिसिस का मतलब खाली एम्बोलिज्म या फिर एक्सीडेंट से नहीं, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो वो भी पैरालिसिस का भाग है, बरोबर. है ना. सो इफ इट इज नॉट वर्किंग, तो बच्चों में अगर काम नहीं कर रहा है तो हम ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं. देन फेशियल ब्यूटिफिकेशन, पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं, सही बता रहा हूँ. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना पूरे बॉडी के ऊपर, आपका चेहरे का ग्लो बहुत अच्छा हो जाता है. हाँ. एक ब्यूटी क्लिनिक भी खोल देते रवि. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, करना चाहिए. व्हाई नॉट? बिल्कुल. हाँ, ये एकदम करना चाहिए. पेशेंट भी करो और साथ में केवल रिंकल रिमूवल कर सकते ना पर एक्यूपंक्चर से. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. 5,000 से 10,000 एक रिंकल निकालने का होता है. हाँ, फिर क्या, कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर Procedures are always expensive. Yes. So beautification, facial beautification, hypotonus. Hypotonus का मतलब high level of Tone कम muscle है. tension. Hypo is less, na? Oh, हाँ. Hypertenus, sorry, thank you. Hypertonus, high level of muscle tension. बहुत ज्यादा muscle tension होता है, जहाँ पर फ्लेक्स भी नहीं हो पाता है कई बार, वाला एरिया एकदम टेंस हो जाता है. हाँ, स्टिफनेस. लेकिन जनरली हमने स्टिफनेस जॉइंट्स में देखा है. हाँ, वही बहुत ज्यादा अगर है तो, if the stiffness of muscle is there, high level of stiffness of muscle, then you can give this point. Function is to expel wind, clears the heat, dissipates dampness. Expel the wind, clears the heat, dissipate dampness. Okay. Dampness. Expel the wind, clears the heat, dissipate dampness. Dampness मतलब कपडे आपण मग पावसाळ्यामध्ये सुकवतो, दमट आर्द्रता त्याच्यामध्ये जास्त आहे ना, ते सुकत नाही, पूर्ण कोरडे होत नाही, ते जे असतात त्याला डॅम्पनेस म्हणतात. डॅम्प. Yes. Okay, finish. Okay, clears dampness. It regulates lung chi. See, that day when I was treating somebody for some symptoms, and I gave lung 9, which tonifies the lung chi. Okay.
But then some student asked me that, why this lung chi has to be raised or tonified. Hmm? See, lung is the only organ which is giving you oxygen. And you can know, मालूम है भैया, लंग बंद हो जाएगा ना तो अपना कार्यक्रम हो जाएगा, है ना? System shut down हो जाएगा। बाकी का कौन सा हार्ट ची जा रहा है वो सब मालूम है क्या आपको? नहीं, मगर लंग ची तो है। ऑक्सीजन मेन ये है हमारे बॉडी का फंक्शन करने का। पानी के बिना, विदाउट वाटर यू कैन लिव अराउंड फ्यू डेज, ओके, विदाउट फूड मे बी फॉर मेनी डेज, ओके, but without breathe, Not even half an hour. because that is the most important chi of the body. If the oxygen is not supplied to the body, the organs will die. Okay, so most of the time we will enhance the lung energy. उसको करना ही पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि लंग एनर्जी को एनहांस करेंगे तब जाके वो पूरा नीचे तक जाएगी, वरना ऊपर चली जाएगी. Otherwise the lung chi has tendency to go up. But if you will regulate it properly, if you enhance and tonify it, then that chi will go to the extremity down there, right? Well, Sir, is it advisable to give lung chi every day? no, not necessary. Not necessary. But if there is a problem pertaining certain things, and if you feel that, yeah, maybe the blood is not being moved properly, then we can. Okay. So whatever I was treating, it was for blood-related issue. So that is why I had to raise the, tonify the lung energy. Okay. So if it would have been, say, water problem, I might have not given. It depends on, what is the symptom and what you are working for. Okay. Okay. So it also clears the damp heat from the spleen. This point is also clears the damp heat from the spleen. What is spleen to large intestine? What is spleen to large intestine? Relation of spleen to large intestine. What is the element? I'm not talking about the points now. I'm talking about the organ spleen. What is the element of organ spleen? It will be mother to the. Yeah, it is earth element. So mother and mother-son relationship. Okay. So this point also clears the damp heat from the spleen. So who is helping? Son is helping the mother. And the son generally helps mother. If mother is old, then what son will do? He will take care of the mother. Okay, so this point will remove the dampness. Because see, if the earth will become damp, then what will happen to the earth? It will not become fertile. चिकल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा. And बन जाएगा तो it is not useful. If it is कीचड़ वाला, if it is smooth, उसके ऊपर से कुछ भी रोड पे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ कीचड़ हो गया तो फंस जाएगा कि नहीं? तो dampness is to be Energy stuck हो जाता है ना? Energy stuck हो जाएगा. So dampness, that is how, this point will help the mother to recover. Regulates chi and blood and benefits the tendons and the joints. It benefits tendons and the joints. Regulates chi of Chi and blood. It regulates chi and blood. See, basically, what the meridians and collaterals do? They move chi and blood to the extremities
chi and blood to the extremities and to all the Zanku organs. Hello, Rajiv. Yeah. That is the role of the meridian, है ना? Yes. हमने starting में किया था इसको. They connects they moves internally, connects all the Zanku organs, all the extremities and spreads externally, है ना? So this point regulates chi and blood. There, Regulates chi and blood. and it benefits the tendons and the joints. Tendons and the joints. हमारे टेंडन्स कौन से टेंडन्स हैं? ये देखिए ये ना palmaris longus और external pollicis, यहाँ पर टेंडन्स है. वो हील के पीछे में जो वो ऐसा हार्ड लगता है वो टेंडन है. Okay, tendonitis can also happen. People, infection of the tendons. Okay, so in case of tendonitis, you can use this point so that it will benefit the tendons and the joints. Can you use this point in rheumatoid arthritis? Yes, sir. Yes, because rheumatoid arthritis is what? Joint. Arthros is what? Joints. Joint. Or infection of the, or the inflammation of the joints. Right? You can use this point. Okay, so this is how this point will work. Qualification, it is an Hersey point of the meridian. Tonification point. Tonification point of the meridian. All the, this we'll learn in more detail when we do 5 elements. But just let me give you a small information. All the mother points will tonify the energy of the meridian, and all the sun points will reduce or sedate the energy of the meridian. Okay. So one Yeah, all the mother points will tonify the energy of the meridian. Like ऐसे याद रखने का, माँ को बच्चा मिला खुश हो जाता ना, उसका एनर्जी बढ़ जाता है कि नहीं, उसकी मम्मी नहीं दिख रही, उसको अचानक मम्मी दिखती है, मम्मी आ गई, मम्मी है ना. और ऐसे याद रखने का कि मदर मिल जाए चाइल्ड को तो उसका एनर्जी लेवल बड़ा हो जाता है. लेकिन जब डिलीवरी होती है, वो चाइल्ड जब आता है तो मदर का एनर्जी डिप्लीट हो जाता है. सो टू sedate the energy of the point, you must give regular sun point of the meridian, mother point and the sun point. ठीक है. ओके, राजीव समझ लगा? वो समझ लो. So the extra information, QG, Q means bent or curved, and chi is pond or pool. Chi is pond or pool. Okay, chi is also energy. So this is Hersey point. This is called as C of the energy. C of energy. All Hersey points are full of energy. Like C के अंदर में जितना पानी होता है बहुत ज्यादा, रिवर में उतना होता है क्या? नहीं होता. सी में बहुत ज्यादा होता है, वेल में कितना होता है? कम होता है. तो यहाँ पर बेंट और कर्व, ओके, बेंट और कर्व, ची और पॉन्ड, पूल, नेम refers to location of the point. Which point? Alive 11 point. Okay, very beautiful point. Blood circulation and all, very nice point. Okay. Ravi, time update 11:51. Yeah. We'll complete. Today I may not have second lecture because I don't know how my patients are appointment today. So what I will do, I will plan it tonight, and even with the patient, I'll ask them to come a little late in the afternoon, and I will start to have my second 2 lectures every day from tomorrow onwards. Okay, so 2 lectures means what? 11 to 11:45 will be 1 lecture, and second lecture will be maybe in the afternoon at say depending on other lectures, I will squeeze in. okay. Okay, so let me see how other people, because anatomy has to come, physiology,
and biology, microbiology, all those subjects. Okay. Okay, so I will have 2 lectures from tomorrow, 45 minutes each. क्योंकि इसमें ना थोड़ा स्लो हो रहा है और इससे फास्ट में जा भी नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए 2 लेक्चर्स लेने। नहीं ये बराबर स्पीड है रवि। ये बराबर स्पीड है रवि, इससे फास्ट जाएगा कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। नहीं बराबर, हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना भाई कि 2 लेक्चर्स लूंगा, इसी स्पीड से चलेंगे और आराम से बिना प्रेशर, बिना टेंशन, बिना लोड लिए पढ़ाई करेंगे, बराबर है कि नहीं? हाँ, इसके लिए 2 लेक्चर्स रखना जरूरी है। ओके, now we'll complete Alive 15 and then we'll stop. Okay. GNU Alive 15, GNU, JIANYU, GNU, GNU। अब वो कैसे कैसे स्पेल करते यार, मेरे को जीक्ल, हम अगर करेंगे जेडी करेंगे, वो एक्सआई करते हैं, कहीं कहीं शिया शिया शाह भी करते हो। श्योर तो जी क्लेफ्ट भी होता है, श्योर भी होता है, शाउ भी। तो वो जरा अब देसी टाइप में पढ़ लो चाइनीज। उसके लिए फिर पूरा मैंडरिन on the arm, when the arm is full in abduction state, abduction मतलब ऐसे अगर साइड में करेंगे abduction, ओके। तो जब abduction स्टेज में रहेगा हैंड, वो जो शोल्डर के सामने बाजू का वाला जो डिंपल है, वहां उसके अंदर Li15 है, ये वाले डिंपल में, ये ओके, ये डिंपल के अंदर Li15। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे भी करो तो चलता है, ऐसे नाही, तिथं ना 2 असे मागच्या बाजूला आणि पुढच्या बाजूला ना असे खळ्या पडतात, खळ्या, ठीक है। वो जो अगर डिंपल नहीं लग रहे हाथ में तो यू आर ओबीज, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट कराने को आने का इधर मेरे पास। हाँ, मैंने एक दिन में 1 किलो भी वजन कम करा है यहाँ पे, 3 सीटिंग में 2 किलो। मैडम ने कितना, 3 सीटिंग में 2 किलो, 3 सीटिंग में 2 किलो। और बाकायदा बिफोर एंड आफ्टर मशीन पे खड़े रहो। ये देखो, ये स्टूडेंट हमारा ले रहा था 1 वीक में 4 किलो वजन कम, 4.5 तक भी आ गया था। वेरी गुड। तो इन्हीं को मैंने, वो वाला मेरा जो फेवरेट वाला है ना, वो ब्लीडिंग 4 पॉइंट मारे थे, बड़ा 21 नंबर की नीडल्स है। वो मुंह के छाले चले गए, मुंह के छाले, वो आती थी, ऐड आती थी, मेरे को याद है अभी भी, मुंह के छाले, अब वो मेरे मुंह नहीं लगेंगे। एक आती थी कोई, एक मेडिसिन था मुंह के छालों वाला, yeah. Okay, so let us when the ये abduction में होता है, या तो साइड में करो या तो सामने करो। ये वाला जो पॉइंट होता है, पहला वाला जो एंटीरियर पॉइंट है, उसके अंदर आपको Li15 मिलेगा। ऐसा ये वाला पॉइंट अगर पेनफुल है ना, चांसेस ऑफ डायबिटीज होता है। हाँ, ये पॉइंट, ये Li15 पॉइंट, when it is sore, you will see all those diabetic people will have sore, this point sore। ये टेंडर होता है ये पॉइंट, हाथ लगाओ तो दर्द देता है। ओके, इंडिकेशन हेमिप्लेजिया, जब हम हेमिप्लीजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड, तो हम लोग ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हेमिप्लेजिक कॉज बाय स्ट्रोक, ऐसा लिखो,
Hemiplegic caused by stroke. Hemiplegia caused by stroke. Okay, in that point you can use this point. Stroke is wind stroke. There are two different types of strokes. नाश्ता केला. हाँ, wind stroke. Wind stroke का मतलब होता है wind stroke का मतलब होता है paralysis, अर्धांग वायु. Okay. So soreness of the shoulder, frozen shoulder, B syndrome. B syndrome का मतलब होता है rheumatoid arthritis. B syndrome. What syndrome? BI syndrome or B syndrome. What does it mean? Rheumatoid arthritis of the shoulder. वही B syndrome Which मतलब letter did bracket you say, rheumatoid Ravi? arthritis What of the syndrome? shoulder. Can you repeat the Huh? syndrome? Can you repeat that syndrome again? Okay. B syndrome. Okay, got it. बाय सिंड्रोम बोलो या बी सिंड्रोम बोलो, एक ही बात है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बाय सिंड्रोम भी कहते हैं. नहीं समझा क्या देवल? सॉरी मैं म्यूट पे चली गई. हाँ समझ गया अब समझा क्या? हाँ, शोल्डर स्प्रेन, इम्पेयरमेंट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, नेक रिजिडिटी. नेक रिजिडिटी है ये, यहां से मेरिडियन जा रही है. रूबेला. What is rubella? Rubella is a kind of a rash caused by virus, red color rashes on the body. Is also called as German measles. Measles. German measles and rubella is the same thing? Yes. Oh. जर्मन मिजल्स म्हणजे आपल्याकडे कांदड्या म्हणतो आपण तसं. हो तशाच टाईपचा. पण कांजण्यामध्ये ते तोंडबिंड फुटतं ना त्याला नाही, त्याला रेड कलर रॅशेस येतात. These are the red color rashes on the body. And it is on the skin. So generally कांजण्या ज्या आहेत ते चेहऱ्यावर येतात. नाही सगळीकडे येतात. बॉडी पे आते हैं. हो, चेस्ट वर येतात. चेस्ट वर सुरुवात होते आणि मग पसरतं. आता हे त्याच टाईपचं पण याला तोंड नसतं, रेड कलरचे रॅशेस असतात. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3-day measles. मतलब 3 दिन में रहेगा जाएगा. 3-day measles. Then this point is also useful for scrofula. How you spell it? SCROFULA. Scrofula. FULA. मतलब क्या रवि? Is it same as tuberculosis level? Archana. Could you repeat the question, Ravi? Scrofula. This point is also useful in treating scrofula. So Okay. is scrofula and tuberculosis the same? I didn't understand the word you were saying, Ravi. Scrofula, SCROFULA. Right, because this is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. This bacteria travels to the lung and then to the lymph node, causing pulmonary tuberculosis. So yes, scrofula could be a type of TB. Type of tuberculosis. Okay. Thank you, Archana. Thank you, Devan. Okay. So the function is to expel the wind, clears heat. Scrofula affects the lymph nodes, right? Yes. Clears the heat, promotes circulation of the chi in the meridian, benefits tendons, relieves pain. Expels the heat, expels wind, clears heat, promotes circulation of the chi. Which chi now? The chi of large intestine. Chi of large intestine. It circulates the chi of large intestine.
promote circulation of the chi. Promote circulation of the chi. अब देखो, जब हम लोग 0 आवर में काम करेंगे ना, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करो, तब जाके आप लोगों का जो है ना वो पॉइंट्स और उसके इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे हमारे क्लासरूम में, यहाँ क्लिनिक में सब लोग आते हैं, फिर पॉइंट से करते हैं, फिर मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि चलो इसके ये याद करो, इंडिकेशन बताओ, इसके इंडिकेशन क्या है। तो उससे क्या होता है, बार बार रिपीट करना, कई पॉइंट्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो पॉइंट्स एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, पढ़ना नहीं पड़ता, वहीं पे क्लासरूम में हो जाता है, क्लिनिक में हो जाता है ना। तो इसका जितना डिस्कशंस करेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से हमको याद रखने को मिलेगा, है ना। वो मेमोराइज नहीं होगा, वो है ना ध्यान में रहता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन दिस इज अ क्रॉसिंग पॉइंट विद द यांग हील चैनल। यांग हील चैनल नीचे से निकलती है हील के पास से, और वो पूरा हमारे ब्रेन तक जाती है, यांग हील चैनल। ओके, क्रॉसिंग पॉइंट विद द यांग हील चैनल। मेरे ख्याल से यांग चाओमाई चैनल का नाम, यांग चैनल। The extra information is about GN, that is shoulder. U is clavicle. This is a supraclavicular clavicular bone. Shoulder bone is also called a clavicular bone. So वो कहाँ पे है point? Shoulder में और clavicle bone के end पे. So that is why it is called as GN. U is clavicle. This clavicle, shoulder bone, and GN is shoulder. So that is why it is called as GNU. Okay, puncture 0.5 to 1 chun, apply 3 to 7 moxa cones, 5 to 10 minutes moxibustion. So this is how we will stop here for. मेरे सारे पेशेंट भी आके खड़े हैं, तो कल से मैं प्लान बनाता हूं, और आज रात में मैं बताऊंगा आपको कि मेरा सेकंड लेक्चर कब होगा, when will be my second lecture. Okay, so we'll go with this pace only, but we will have more time, spread करेंगे अपना टाइम, ठीक है। लेक्चर इतना स्पीड से जाऊंगा मैं, इससे फास्ट जाना कोई मतलब ही नहीं आता, मतलब नहीं, ठीक है। Okay, so let us say bye for today. Yes. And tomorrow let me plan this thing, 2 lectures per day. Okay. Thank you, Ravi. तुम लोग बाकी सब लोगों के साथ में थोड़ा बैठ के देखना पड़ेगा, बाकी दूसरे लेक्चर्स कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। मेरे क्लिनिकल भी है, और ये सब कुछ किस तरीके से कवर कर सकते हैं। हाँ बोलो अर्चना। नहीं, I just said thank you. Okay, you're welcome. ठीक है। Ravi, I will call you in 10 minutes, something important. Very good. Yeah. Welcome Yeah. to Puratwala. Welcome to the college. We are waiting for you. I'll call you. नहीं हमारे क्लासरूम की शान बढ़ जाएगी एकदम से। क्या बात है। अरे बड़ा आदमी है। चलो ओके बाय। Bye. Bye, everyone. बाय।